Okay. I will. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm gonna ask you. I'm definitely gonna unmute you. You will be the first person to introduce yourself. Very sorry about the pronunciation. Very sorry. Okay. In respect of everyone's time, welcome once again, and it's beautiful to have you. Especially क्योंकि आज Sunday है. Especially the festive season is still going on. एंड जो पोस्ट दिवाली की सेलिब्रेशंस है, काफी लोगों के घर पे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, बट यू स्टिल गिव अस टाइम, you still took the time and to come over here, listen to me, listen to whosoever is going to talk about, and I'm going to make sure that आप यहाँ पे अपना टाइम लगा कर आए तो you get something valuable, something which would be worth it. Yeah, sound नहीं आ रहा. Is everyone okay with the sound? Sachin, I think the sound is okay from my end. Can someone show me a thumbs up if the sound is okay? Or okay, Badal says it's okay. Sachin, yeah, I request you ki if you could log out and then join again. Yeah, maybe that could help. Okay, so now I'm just gonna talk to you guys, not getting distracted. So now this meeting, our business is not very conventional. Yeah, you would discover as I proceed. So I don't want to make it very formal, क्योंकि है ही नहीं. It's a very one-to-one. It's a very personalized. It's a very different kind of a business. So आप जितना I would be talking my heart out and I'll be really expressing myself. So it's not a very boring kind of a meeting that I want to make it. So as much as possible, make use of the chat box. We will be talking about it, and as much as possible, try to absorb what I'm trying to say today, because it can really change your life. Yeah, so from here on, I'm going to share the screen. I'm going to start sharing the business presentation that we have for today, and later we'll be talking about it. So just to remind you, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ कि today is an intro session. Yeah, so as much as it's possible for me, I try to cover in 30 minutes. Yes, but today is an intro session. किसी को language बिल्कुल नहीं समझ आ रही, if you're not able to understand, please let me know. Yeah, आप बता सकते हैं. Okay, is the screen visible? Yeah. Yes, all right. It's okay. Okay, thank you. Sorry, just gonna do a minor adjustment. Yes. Okay, so today's date, 15th of November. Why have I written this on the very first slide? It's because today's date is very, very, very important. Yeah, it could be important for those, बहुत जरूरी उन लोगों के लिए है जो बहुत देर से किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे. There are so many people who want some platform, who wants an opportunity to change your life. Yeah, so today's date could be, जैसे होता है ना कि हम लोग 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, we look back to the date and कभी सोचेंगे कि 3 साल पहले मैंने 15th नवंबर को एक presentation, एक business opportunity के बारे में सुना था, and that was a turning point for me. That's why today's date is very, very important. Okay, before proceeding, I'm just gonna turn off the annotations and all. Yes, perfect. Sorry about that. Sorry. Okay, all set. Perfect. Sorry. Yeah, so today's date is that important. Yeah, and I request you all, आज की जो सेशन है, आज का जो प्रेजेंटेशन है, इसको ना आप उस तरह से सुनना. This really have the potential to change your life. Yeah, it may or may not be right for you. It might not, मतलब हो सकता है बदले ना बदले, but this is very, very important. हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए. तो आज का जो सेशन है, आज के जो 30 minutes मैं आपकी लेने वाली हूँ, that's going to be remarkable. That could be a turning point in a lot of people's life. Yeah, so be active,
अगर आप लेट कर सुन रहे हो, बैठ कर सुनिए. अगर आपके पास डायरी है, आपको कुछ नोट करना है, कीप ऑन नोटिंग डाउन. एंड टुडे इज द डे व्हेन एवरीवन, हम लोग सोचते रहते हैं कि यार कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो, कुछ चमत्कार हो. वी ऑलवेज हैव दिस बिलीव कि यार आई हैव द पोटेंशियल, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, ड्रीम्स पूरे करने हैं. या सो वी बिलीव that today you are going to be getting that platform. लेकिन अगर हम लोग attentively नहीं सुनेंगे, we might lose this. We might understand this after 5 years. हो सकता है 5 साल के बाद समझ आए, एंड तब सोचेंगे यार पहले क्यों नहीं ठीक से सुना. या सो फॉर 30 minutes गिव योर 100% टू इट. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, दैट्स ओके. Yeah, so I'll just start with it quickly. Before starting, मेरे 2 questions है. I have 2 questions for you. And those questions, as easy as it may sound, हो सकता है आपको बहुत stupid question लगेंगे, but it's very very important for you to answer them to yourself. First question is as basic as it could be. Once again, before starting, it's a business presentation. Yeah, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देती हूँ. So it's a business presentation. We'll be talking about success. We'll be talking about business. We'll be talking about how to make money, how to fulfill your dreams. Yeah, that's the background. So first question is, how many of you really want to be successful? Yeah. We all might say कि यार वो तो obviously होना है, but today I really want you to answer this for yourself. जैसे कहने के लिए हम सब लोग कह देते हैं हाँ सभी को तो सक्सेसफुल होना है, सभी को तो खुशी चाहिए, सभी को तो पैसा चाहिए, इसमें but do we really want it? How far are we willing to go? कितना हार्ड वर्क, कितना स्ट्रगल, कितना फोकस डालने के लिए हम लोग रेडी है? Answer this for yourself. If you think yes, if the answer is yes, write in the chat box. आप ये मत सोचिए कि 5 लोगों ने तो लिख दिया yes. Do you want to be successful? आप चाहते हैं तो write yes. Yeah, make use of the chat box. I'm reading the chat side by side. I want to know you. Yeah, how many of you really want to be successful? That's the question. आप मुझे आंसर देना दे, खुद को जरूर देना. Do you really want to be successful? Second is, do we need a platform big enough to make us successful? और आई कैन ऑल्सो आस्क, मैं ये भी पूछ सकती हूँ, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या जो हमें जिस लेवल के हमारे ड्रीम्स है, जिसकी हम बात करेंगे, जिस लेवल की सक्सेस हमें चाहिए, डू वी हैव अ प्लेटफॉर्म बिग इनफ टू मेक अस सक्सेसफुल? हमारे पास है क्या? आज की अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें, आज की अगर हम लोग जॉब्स की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, can you look around? Can you see a platform which can make you really successful जैसे आप होना चाहते हो? Yeah? Answer that for yourself. हमारे पास options क्या क्या है, हमारी struggle कितनी लगेगी? Yeah? These are really really important questions, and I'm sure आपको इसका आंसर अपने आप को जरूर पता होगा कि यार हमारे पास opportunities क्या क्या है. So now that I'm going to start talking about what we have to share, I really want you guys to thank that person who invited you here. जिन्होंने भी आपको यहाँ पे invite किया है, हो सकता है उनकी वजह से आपकी जिंदगी बदल जाए. Yeah, so these were the 2 basic questions which we need to ask ourselves continuously. कि यार सही में successful होना है कि सिर्फ I think you get my point. Yeah, जिस opportunity की हम लोग बात कर रहे हैं, it's a proven opportunity. It's a proven business which has changed the life of millions around the globe. Yeah. Why am I saying this? आपको ये assurance देने के लिए कि जिस business की मैं बात कर रही हूँ, it's not a hit and trial. ये कल का बिजनेस नहीं है, या फिर आप पहले इंसान नहीं है जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में. It is a proven business which has changed the life of millions, not in India, around the globe. Yeah, so I'm talking about a very very successful business, very solid, very stable business. And once again, we don't know, it may or may not be for you. आपके लिए
आपको कोई यहाँ तक लाके बिठा सकता है, आपको मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, but you have to decide is it for you or not. Yeah, so it may or may not be right for you, and that's okay. You would still get a lot to learn from today's session. अभी मुद्दे की बात पे आते हैं. Let's get to the point. What do we do? You know exactly हम लोग क्या करते हैं इस business में? And I'll be very direct. You know मैं कुछ ऐसा गोलमोल घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी. As much as possible, I'll try to give you that much information. We provide solutions to the two major problems of the world. Yeah. Can you, in the chat box, could you type and could you tell me आपको क्या लगता है what could be the two major problems in the world? Yeah. For example, if you're from New Delhi, तो मैं सिर्फ न्यू दिल्ली की एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर वर्ल्ड, जो न्यू दिल्ली में भी है, जो अफ्रीका में भी है, जो यूएसए में भी है, जापान में भी है, एवरीवेयर. What could it be? I'm getting so interesting answers, and there is no, you know, it's a guesswork. It's a तुक्का मार देना है. आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि maybe it's corona, maybe it's whatever. I don't know. Like it could be anything. Yeah. कितने लोगों के दिमाग में कोरोना आया? Yeah, fairly right, fairly right. That is definitely one of the major problem in the world right now. What we are talking over here is, it's very important to understand this point. It's very important. This is one of the major crux. Yeah, हम लोग एक उस business की बात कर रहे हैं जिसका it's a solution to the problem which everyone. आप अपने घर की बात कीजिए, आप अपने आस पड़ोस की बात कीजिए. Talk about your neighbors, talk about your relatives, talk about your friends, talk about any damn person that you can think of. Yeah, आज की डेट में, in today's time, our health, can you अपने हिसाब से, do you know someone who has health challenges or who would want to be healthy? Yeah, I think अभी health awareness इतनी है that health definitely is it's a problem. For sure it's a problem. I'm a dietitian and आए दिन मेरे पास लोग आते हैं जिनको सिर्फ weight loss, weight gain का problem नहीं है, उनको diabetes है, उनको thyroid है, उनको कितनी हजार तरह की problems है. And then there is another problem which is पैसा. Yeah, financial health उसको कहते हैं. So physical health and financial health. Yeah, these are the two major problems of the world. I also feel mental health is very close related. है ना, आपकी जेब में अगर पैसा है तो काफी problems mentally आप ठीक हो जाओगे. Yeah, similarly if your physical health, you're strong enough, you're fit enough, आपको कुछ problem नहीं है, health challenge नहीं है, तो mentally भी you are very sound. You know, there's a good chance कि these are the two reasons कि हमारा mental peace जो है वो खराब रहता है. Of course there are the reasons, but these are two major reasons. So the solution, हमारा business किस पे based है? Understand this very carefully. Yeah, our business is based on a problem which is prevalent around the globe. That is your physical health and your financial health. How do we do it? Over here, I'll just take a tiny little break. And I would want to know it from you. How many of you have heard of this company, Forever Living Products? Yeah, कितने लोगों ने नाम सुना है? Can you maybe turn on the video, raise your hand, show me chat box में लिख के बता सकते हो कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है Forever Living Products? कलेश यादव जी, जो नए गेस्ट है, how many of you know about this company? This is not fair, guys. I mean, you guys are not typing there. You're not talking. Would it be fun if I turn off my video and then talk? No, right? How many of you have heard of it? Okay. I really need quick answers. ये क्या है? Where is the energy? See, guys, you guys are here. आप भी 30 मिनट दे रहे हो, मैं भी 30 मिनट दे रही हूँ. Yeah? Why not be present 100%? Come on. Okay. So right now, the answers that I'm getting are from people who are working in Forever. I need answers from the guest. मैं आपको जानना चाहती हूँ, जो हमारे साथ काम करते हैं. I know you guys know. Thank you for replying. But it's a motivation for everyone who's new. No one's judging you, you know.
I'm not going to proceed. I'm waiting for your answers. There are 41 people in the group. अगर आपने नाम नहीं सुना, you can easily write in the chat box कि I don't know, नहीं पता. Okay, सुना है but कुछ information नहीं है इसके बारे में. Okay, नहीं सुना. Okay. Okay, let's get to the point. But really, use the chat box. Type more. Okay. Okay, all right. So I'm going to take it from here. There are people, from what I get, there are people who know about it. It's a 50-50 ratio. Yeah, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना, most of the guests do not know about it. Those who are not new, they have some idea about forever living products. Yeah, so I'll also be telling you कि आपने नाम क्यों नहीं सुना and क्यों सुना है. Of course, you would know the reasons. But let's talk about it. So जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, जो हम फाइनेंशियल और फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ जिस कंपनी से हम लोग लेने की बात करें, the name is Forever Living Products. Yeah. Why have we chosen this company? कितनी सारी और companies है, a lot of companies. Why are we talking specifically about this one? Let's know that today. Yeah. First of all, this company जिसकी बात कर रही हूँ, मैंने कहा था it's a global business. This company is in 160 countries. Yeah. And there are people around these countries who have been super successful. There are people, almost more than 50,000 people who are engaged in this company. They are successful in India. Yeah, but there's a reason why you don't know. We'll be talking about that. This company is 40 years old. Yeah, we'll be talking in detail about it. Once again, it's just an intro session. We will definitely have an in-depth conversation. This is a 30-40 minutes of intro session. We will be having a 4-day training free of cost, just to mention. Acha, before I forget, a disclaimer. In the entire training, in the entire session, meetings, अगले 4 दिन की है, आप हमारे साथ 1 साल में काम करो, जब everything is free of cost. Yeah, for this session, nobody asked you for money. In the next trainings that I'm talking about, the 4-day training session, it's also free of cost. Why am I mentioning this right now? ताकि ना वो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है. I don't want you to keep on thinking now she's going to talk about, okay, give $99, then you will be going to the next training or something. Nothing like that. Yeah. आज भी हाथ जोड़ के आप सबको स्वागत है. We'll be happily sharing the knowledge and the business opportunity, and this opportunity is risk free. I'll be inviting you to the 4-day training also. It's free of cost. Yeah. So the company's name is Forever Living Products, and let's talk about why did we choose this company and not any other company. Yeah, there are so many companies. हम लोग काफी जगहों पे explore करके अपना पूरा research करके, as a dietitian I've done my bachelor's, I've done my master's from Pune Symbiosis, and there's a reason why I am so inclined towards this company. Yeah, किसी भी company में अगर हमें काम करना होता है, we have to check 3 things. Yeah, if you want to work in any company, and I'm repeating myself in English and Hindi, I hope you're getting there's no language barrier. Yeah? Whenever we have to select a company, whenever we have to decide our future in any company, 3 चीजें हमें देखनी चाहिए. Yeah. First is the background. First is the backbone. Do you agree with me? Yeah. Why is it important? क्यों important है? See, the background of the company could tell us the future of the company. Yeah. मान लीजिए अगर हमें कंपनी की बात करें जो 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी है, I think we cannot say it has a very very solid, it may or may not have, but doubts रहते हैं. Yeah, कि अभी तो 5 साल तो एक कंपनी को लगता है एस्टैब्लिश होने में, to reach a profit stage, to think about your future in any company. The background of the company should be very very strong. Yeah. Second is the products किस तरह के है उस कंपनी के. Now there are if there are products जो already हर एक घर की need है,
Do you think it is easy to work with that company? Yeah, if there are products which are of the premium quality जो already हर एक घर में चाहिए, do you think it's easier to work in that company? Third is the financial compensation plan. Hmm? There's a good chance that background बहुत strong है, background is very very solid, products are really good, but company पैसा नहीं देती. Yeah, the compensation plan is not very good. Is it worth working in that company? Yeah, आज की डेट में there are so many companies, we work for XYZ companies, and really, I mean, it's a very very sad situation, very very sad scenario to see कि जहाँ पर companies used to pay 50,000 70,000, now they have come back to 20 35,000. Why? Because the background wasn't very strong, or the financial compensation is not very solid. We'll be comparing, we'll be talking about forever also. वहाँ पे forever का क्या growth है, वहाँ पे forever में what's the potential about it. Yeah. Moving ahead, I'll quickly run you through these points, but इसको हम बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में हम लोग we'll understand in the 4-day training. Today's training is just to give you an idea कि बॉस ऐसा भी कुछ exist करता है. You know, there is something which is risk free, which will give you not just money but recognition, your fame, your जो भी आपका dream है, your dream car, अगर आप if you want to travel internationally, there are so many things. And luckily in today's session, because it's Sunday, because he had more time, we have a person in our meeting present जो जिन्होंने ये सब कुछ experience किया है. He is our leader, and I will definitely introduce him to today's session. Consider yourself very very lucky. This is a very special session and a very special batch. So moving ahead, talking about the background and backbone of this company, ये जो company है 19 Forever Living Products, it started in 1978. Yeah, USA में start हुई थी, India में it came in April 2000. It's a global business. I repeat this once again. जिस opportunity की मैं बात कर रही हूँ, it's in 160 countries. It means कि आपको एक opportunity मिल रही है to do business, to build a business in 160 countries, living in India, staying in India. How many of us know, हम में से कितने लोगों को कोई ना कोई जानता है जो USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया बाहर गए हैं पैसा कमाने के लिए, or to study? How many of us know? Our relatives, maybe someone from our family, someone from our neighbors, our relatives. How many of us know? Guys, come on, yaar. I mean, I'm really trying hard to make it as interactive as possible. You guys are not cooperating. It should be वो फ्लो बहुत तेज होना चाहिए चैट बॉक्स का. हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है. कौन सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे? कितने लोग जानते हैं आपको जो बाहर है? Yeah, just write a simple yes or no. Yeah. Very good. Thank you very much. So why do people go out? बाहर क्यों जाते हैं? Because the return is really good. Yeah, do you agree with me? वही काम करने का पैसा इंडिया में कम मिलता है, बाहर ज्यादा मिलता है. As simple as that. Yeah. And क्या वो जाते ही वैसा पैसा मिलना शुरू हो जाता है? Yeah. If I be very honest with you, my brother is in Australia and I know how much he struggled. Yeah, it's been 4 years, night shift, day shift, studies, this and that. To build a career outside is a mission in itself. Why do we go out? To earn money. Abhi wo opportunity aapko mil rahi hai to sit in India, be at your home and work in not only in one country but in 160 countries. It's a huge. That's why I spent more time, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा point है. For me it's a very big point, so that's why I spent more time. This turnover of the company 25,000 crore, over 10 million forever business owners around the globe, and important point, completely डेट फ्री कैश रिच कंपनी. या कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप इसका नाम जरूर नोट कर लेना. या ऑल ऑफ यू, कई बार लोग मीटिंग के बाद भी पूछ होते हैं कौन सी फॉरएवर न्यू कोई तो कंपनी थी, नाम बताना चाहिए. या सर्च कर सकते हैं. 300 ऑफिसेज कंपनी के अपने ऑफिसेज है. इंडिया में 19 ऑफिसेज है. द हेडक्वार्टर्स इज इन मुंबई एंड इट्स अ कंप्लीटली कैश रिच कंपनी. इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है.
if you're looking at the backbone, it's a very, very solid point to consider when you're thinking about your future. Vertically integrated company, it's it's one of a kind, and iske bhi bare mein hum log will be talking in the 4-day training. Moving on to products, um, मैं ना ज़्यादा नहीं बोलूँगी. I wouldn't talk a lot about it, but I just want you to search world's best aloe vera gel in the world. Yeah, you can search world's best bee honey in the world, world's best tooth gel in the world. World's, yeah, you get the point. What I'm trying to say over here is we are the leaders. अभी कितनी सारी कंपनीज है जो एलोवेरा बनाती है. हम लोग टीवी पर भी अगर एड देखते हैं, आज क्रीम्स में, सोप्स में, सनस्क्रीन, लोशंस, एवरीथिंग उसके नीचे क्या आता है? विद एलोवेरा. क्यों लिखा आता है? बिकॉज टुडे पीपल आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लांट. या हम में से काफी लोगों के घर पे भी उगा होता है. या मान लीजिए 500 कंपनीज भी अगर कम से कम है इन द वर्ल्ड जो एलोवेरा बना रही है, उसमें हम लोग लीडर्स है. तेरा 80% जो उसका शेयर है वो सब फॉरएवर के पास है. सिमिलरली हनी का 60 to 65% शेयर. वी आर द वर्ल्ड लीडर्स, माय डियर. Abhi, I really want you to open your mind to understand what I'm trying to say. एक जगह पे मारुति है, जो भी है, एक जगह पे there is no comparison. It's the leader. Sorry, really bad example. Forgive me for that. But I was just trying to keep my point across. Most of our products are worldwide patent. Yeah, even if we are the world leaders. अभी क्यों है वर्ल्ड, वो समझने के लिए आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा. 4 घंटे देने पड़ेंगे 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए. या मैं आपको एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा भी दूंगी, शो करके भी दिखा दूंगी, बट जानना जरूरी है. इट्स ऑलरेडी 8. आई थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इट. whatever the land they have and the top scientist research, हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे. फाइनेंशियल कंपनसेशन की हम लोग let's see the examples of it. Do you think that's a better idea? Why to talk about it? बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे 4-day trainings में. बट अभी मैं आपको बोलूँगी बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉरएवर बिजनेस ओनर फ्रेंडली प्लान है, हाईएस्ट पे आउट. एक छोटी सी एग्जाम्पल है. This company has made 4,000 millionaires in 20 years in India. Yeah, I believe, मतलब आई एम श्योर मेरे से बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं. देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर में जितनी मैंने रिसर्च की, स्टडी की है, not a lot of companies can make 4,000 millionaires in 20 years. So there are things that we need to consider. And I'm sure आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अभी डाउट्स, क्वेश्चंस आ रहे होंगे. Keep them, रखिए उनको. या सिर्फ इस बेसिस पे अपना डिसीजन मत लेना कि आपको कुछ डाउट है. आई वॉन्ट कि आप अपने डाउट्स क्लियर करें. आपके काफी हद तक डाउट्स, योर डाउट्स विल गेट क्लियर्ड इन द 4-day ट्रेनिंग. बट देन कीप देम. इट्स ओके. मुझे भी बहुत डाउट आए थे. आई बीइंग अ डाइटिशियन, आई हैड सुपर क्रिटिकल क्वेश्चंस. मैं तो एलोवेरा के उसमें भी घुस गई थी कि यार ये कैसे हो रहा है. सो कीप देम. That's my humble request. These are the examples. I'll run through it. I'm going to talk about all the जैसे हमारे पास जो achievers है, मैंने कुछ screenshot लिया, आप देख सकते हैं. So I have to speak about it quickly. ओंकार सिंह, कृष्णा अरोड़ा, आशुतोष पतियास. These are the checks that I've mentioned. इनकी उम्र देखिए कितना टाइम हो गया forever में. मनदीप कंबोज 11 years. Now this is where I wanted to bring it. I'm just kind of taking it through. The reason I skipped that was because जैसे होता है ना, one step ahead, one step ahead. We have the leader of everyone जिनके भी हमने pictures देखी, and not just them. This person, Mr. 𝗪𝗔𝐿 also known as नंदा साहब, हम सबके leader है, हम उनको प्यार से नंदा साहब बुलाते हैं. He has an experience of 16 years in this company. उन्होंने वो सब एक महारत हासिल की है जो इस कंपनी की हम लोग बात करेंगे, जो हम चाहते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, जो हम पैसिव इनकम, साइड इनकम, ग्लोबल टूर्स, या फिर जिस व्हाटएवर वी वांट, ही हैज अचीव्ड इट ऑल. सिर्फ पंजाब में इनकी टीम इज
there's so many people जिनकी लाइफ इन्होंने चेंज कर दी है. He has traveled to 12 countries and global business, जैसे मैं बोल रही थी 160 कंट्रीज में, तो almost 18 to 20 कंट्रीज में इनका बिजनेस चल रहा है. तो there's a lot that I would want him to share, and of course आज की जो ट्रेनिंग है ये थोड़ी सी स्मॉल पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. तो नंदा साहब, a humble request, if you could please unmute yourself and थोड़ा सा हमें जरूर ज्ञान दीजिए. How did you get into it, and how is your journey so far, and we would love to hear from you now. थैंक यू संजम। बहुत आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आपने यू टुक द इनिशिएटिव और आपने आज का प्रोग्राम ये एज इट इज जैसे सोचा था वैसे आप कंटिन्यू किया। थैंक्स फॉर दैट। और दोस्तों मेरा नाम सरबजीत सिंह नंदा है। अभी मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। बेसिकली मैं शिमला से था, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद फिर अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपनी फैक्ट्री चलाई। तकरीबन 20 साल मैंने अपने स्पेयर पार्ट्स का काम किया। लेकिन जैसे होता है ना, एक सक्सेस की जो कामना होती है, शायद छोटे होते जब आदमी 8वीं 10वीं 12वीं में होता तब सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जिंदगी के प्रैक्टिकली आता है तब उसको पता चलता है असलियत क्या है। तो मैं भी देख रहा हूँ आप यू आर वेरी मैच्योर पर्सन। बहुत सारे यहाँ पे मेरे को नजर आ रहे हैं जो कि शायद जिंदगी के कुछ पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन कई बार हमारे को दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अभी मैं चैट बॉक्स में किसी का मैसेज भी पढ़ रहा था कि हमारे को वर्क हार्ड करना पड़ेगा। दोस्तों सारे वर्क हार्ड नहीं करेंगे, सारे नहीं करेंगे। सबको चाहिए, सारा कुछ है, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं करेंगे। जिनके ड्रीम स्ट्रांग होंगे ना, जिनके अंदर दम होगा कुछ करने का, वही हार्ड वर्क करेंगे, वही अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। इसलिए इंटरनेशनली ये जरूर नापा तोला गया है कि खाली 3% लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। बाकी लोग उनके सपनों को पूरा होता देखते हैं या उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा, जरूर आप उसमें बने रहे, क्योंकि उसके लिए कोई लागत नहीं है। उसके लिए हाँ, हो सकता है कि ये 3-4 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट डेज रहे। तो दोस्तों 2005 में, हालांकि मेरा भी जो कारण था उस समय मेहनत करने का या पैसा कमाने का नहीं था। फादर डायबिटिक थे। जैसे संजम ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे पास प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि हमारे को सिर दर्द से लेके ट्यूमर, अल्सर, कैंसर तक या उससे भी आगे लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसके भी डिटेल में बात बाद में करेंगे। लेकिन ये समझो कि आज हम अगर 28-30 हजार करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, और 40 सालों से करते आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट में दम है, इसलिए कर रहे हैं। तो हमारे को ये बिलीव करना पड़ेगा, हमारे को ये विश्वास करना पड़ेगा कि अगर आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉरएवर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे को नहीं पता चला, दैट इज सेकेंडरी। वो भी बाद में समझ में आएगा, क्योंकि हमारी कोई ऐड है नहीं, हमारा कोई न्यूज़पेपर में या कोई टीवी चैनल ऐसा है नहीं जो कि दिन रात आपको इसके बारे में बताता रहे। जो बता रहे हैं ऑलरेडी करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ के प्रोडक्ट्स को यूज करके और इसको आगे प्रमोट करोगे तो वही पैसा जो उधर जा रहा है आपके घर में आना चाहिए। दैट इज सो सिंपल, इतना सिंपल है। अभी कुछ चेक्स और आप देखोगे, देख के आपको कई बार डर भी लगेगा, यार इतना करोड़ों में चेक्स कैसे दिखा रहे हैं, यार इतना पैसा कैसे आ सकता है। लेकिन दोस्तों जो जिनको आ रहा है वो मेरे बहुत क्लोज हैं। आप अभी मैं 8 बारी ऑलरेडी इस तरह के चेक्स ले चुका, अभी आप इसके बाद देखेंगे। लेकिन मतलब ये है कि 99% अगर नेगेटिविटी मार्केट में है तो, लेकिन 1% पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं पे है। आप उसको संभाल के रखो। वो 1% है, आपको वो 100% तक ले जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी सफर जो है पिछले 15 साल का इज रियली वंडरफुल। पता नहीं कितने ही कंट्रीज घूम लिए। आप जो भी चाहे व्हाट्सएप में अपना कांटेक्ट नंबर देंगे तो मैं आपके पासपोर्ट की सारी कॉपी आपको भेज दूंगा, ताकि आप तसल्ली कर लें। और सेकेंडली जो अभी फोटोग्राफ्स संजम ने दिखाए हैं, मतलब कंपनीज के जीएम लेवल के लोग जिन्होंने एमबीए कर लिया, बड़ी बड़ी पीएचडी कर ली, उसके बाद 5-5, 10-10, 15, 20-20 साल अपनी जिंदगी के लगा लिए, लेकिन उनको शायद लगा कि जिंदगी में वो सारा कुछ नहीं मिल पाएगा जो हमारे को चाहिए। तो वेरी सॉरी फॉर द पर्सन जिनको खाली इंग्लिश समझ में आती है। आई रियली अपोलोजाइज कि मैं इसको, लेकिन मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई पर्सन जो हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ पाता होगा। तो दोस्तों शुभकामनाएं आप सबके लिए। आपने समय आज का निकाला, हालांकि दिवाली के अगला दिन है, आपके पास 100 काम होंगे करने वाले, लेकिन जो भी यहाँ पे आए हैं उन सबके साथ शुभकामनाएं। हमारा एक ही मकसद है कि जो हालात 2005 में मेरे साथ थे, आज से 15 साल पहले, उस हालात से बहुत आगे निकल चुके हैं। जो अभी भी फंसे हुए हैं, जैसे 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजों की बात हुई है कि सेहत होना बड़ा जरूरी है,
पहला जो सुख है दैट इज निरोगी काया। लेकिन अगर हमारे को रोगी कई तरह के लगे हुए, शायद हम पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर हम रिष्ट पुष्ट है, अगर भगवान ने हमारे को अच्छी सेहत दी है, तो सेकंड जो है सुख की तरफ हम बढ़ेंगे। और जरूर आप बिलीव करके यहाँ पे आओ, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, आप उनका शुक्रिया अदा करें। और आप अगर चाहें तो अपने 4 दिन की ट्रेनिंग लेके देन यू कैन डिसाइड। अदरवाइज डिसाइड करने ना करने में कुछ ज्यादा है नहीं। या तो आज को आपको कह रहे हैं कि आप 10, 20, 50 हजार पहले निकालो, फिर तो आपको कोई रिस्क लगे। लेकिन अगर आपको कोई कुछ भी नहीं मांग रहा है, फिर भी आप अगर डरे हुए हैं, तो हो सकता है किसी और की एक्सपीरियंस है, किसी और की कंपनी के ऐसे कारण हो सकता है माइंड में कोई इस तरह की चीज हो। लेकिन आप इसको देखेंगे एंड आई एश्योर यू, आप मैं उस चीज की गारंटी देता हूं कि जो संजम ने कहा है कि ना आपकी ज्वाइनिंग में, ना आपकी ट्रेनिंग में किसी भी तरह का आपका कोई भी लॉस नहीं है। हाँ, गेन हो सकता है, बहुत बहुत कुछ आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए दम चाहिए। अपना माइंड मेकअप करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ। शुक्रिया, गुड लक टू ऑल। Awesome. Thank you for the energy wall. Whenever Nanda Saab speaks, तो goosebumps आते हैं. You know, it's like कि मैं 4 घंटे बोलती रहूं और वो 5 घंटे बोले एक समान. It's one and the same thing. Yes, because he has lived it. उनका एक एक शब्द अभी, I think if I'm not wrong, he is past that stage कि यार मैं कहीं घूमूं, मैं कहीं जाऊं. The only reason now he is here is to share his experience, you know, कि मुझे जो मिला है मैं बाकी लोगों के साथ वो बांट सकूं. तो it's from that space, from that heart, it comes. And yes, and definitely I really like that line when you said कि अगर 99% negativity है, अगर कुछ भी XYZ thing है, कुछ तो positive होगा. या अगर इतना कुछ भी है, कुछ तो 5,000 का नकली नोट नहीं हो सकता ना, क्योंकि असली भी नहीं है. या सो कुछ चीज असली है, तभी कुछ चीजें जैसी भी है. या सो एंड ऑल्सो अभी इट्स अ इंट्रो सेशन, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो माइन्यूट डिटेल्स है, जो आपको जान के उतनी हैरानी होगी कि यार इस तरह की कंपनी भी है. या वो आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज जस्ट एन इंट्रो सेशन. इसको गलती से ना एज्यूम मत कर लेना, अच्छा ये वैसा है, ये ऐसा है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, यहाँ ये करना है, वो करना है. आपको नहीं पता. आपका बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है, एंड यू कैन बी रियली सक्सेसफुल इन योर फील्ड. बट दिस बिजनेस इज वेरी न्यू. I joined this business some time ago. मुझे देखकर लगा था, जैसे हमारी एक धारणा बननी शुरू होती है ना, we kind of start having कि यार अच्छा ये वैसा है, okay this is, नहीं पता चलेगा. Today's meeting is just to tell you कि there is an opportunity which might be right for you. उसको कैसे करना है, क्यों करना है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. I hope this is clear enough. अभी लास्ट का, अच्छा बिफोर प्रोसीडिंग अनदर, कैन आई टेक अनदर 10 मिनट्स आपसे? मुझे पता है सेशन थोड़ा लंबा चला गया, 8 बजे तक खत्म करना था, बट इज इट ओके इफ दैट्स ओके विद यू? ओके, थैंक यू बादल. मैं बादल के लिए कंटिन्यू करूंगी. यू ऑल कैन टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, लाइक व्हाट्स स्टॉपिंग यू? सिर्फ हाँ नहीं तो लिखना है. हम लोग एक्चुअली में एंड आई नो कि आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो, आप मुझे जानते नहीं हो, तो ट्रस्ट इश्यूज है, यू डोंट नो हु आई एम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज थोड़ा सा स्लाइट बिलीव दैट इट कुड बी राइट. या उससे बैठो, उस एनर्जी से बैठो. देखो, आज तक हमें कोई भी मीटिंग्स में, कोई भी कन्वर्सेशन, कहीं पे भी हम काम करते आए हैं, अभी खाना बनाना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है, उसे लाइफ चेंज नहीं होगी, वो आपको करना है, कर लेना. बट दिस इज रियली समथिंग व्हिच कैन फ्लिप योर लाइफ. सो आई जस्ट टेक अनदर 10 मिनट्स, एंड उसके बाद हम लोग देखते कैसे करना है. वी कैन then we can talk about, discuss about each other. Okay, so from here I take off, and thoda quick, I understand everyone has their time commitments. Now this is one of my favorite slides. या ये थोड़ा सा देख के हमें लगता है कि यार अभी तो नकली है, ये ऐसा पैसा कौन देता है, या ये तो स्कैम है. आ सकता है माइंड में ना, आने दो, कोई बात नहीं. ऊपर आपको चेयरमैन बोनस चेक दिख रहा है? यस नो तो बोल दो, हेलो. Yeah, can you see chairman bonus check? this is the reason this is the reason अगर आपको forever
even if you're thinking कि यार forever करे या ना करे, this is our vision, this is what makes us different from other companies. इसकी वजह से आप कंसिडर करो कि हमें करना चाहिए. हाँ, जिस तरह के चेक्स, जिस तरह की लाइफस्टाइल, जिस तरह की हेल्थ यहाँ से मिल सकती है, it's for me, I've done my bit of survey. मैंने अपना घूम के देख के करके छोड़ दिया है. I couldn't find it. अभी चेयरमैन बोनस चेक क्या बला है? इट्स लाइक कि आपने फॉरएवर, अभी मैं बोल रही हूँ फॉरएवर एक बहुत ही प्रीमियम कंपनी है, वर्ल्ड लेवल के हमारे प्रोडक्ट्स है, ग्लोबल बिजनेस है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, बट नाम तो सुना नहीं कभी. You never heard about this. One question from my side is, do you know Bonvita? Do you know Lux, Mango Fruity, Maaza? कैसे पता है? How do you know about it? Maggie? How do you know about it? We see it on television. Sunsilk, oh my god, there's so many advertisements. हर एक चीज को हम कैसे जानते हैं? एड के थ्रू जानते हैं. या हर एक कंपनी का ना बजट होता है एडवर्टाइजमेंट, एंड दैट इज अ रियली बहुत बड़ा बजट होता है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जब तक कस्टमर को पता नहीं चलेगा बॉस उनका कुछ जो प्रोडक्ट है वो है, एग्जिस्ट करता है, तो बिकेगा कैसे, है ना? सो द बिग चंक ऑफ मनी गोज इन एडवर्टाइजमेंट. डू यू नो दिस थिंग? अमिताभ बच्चन जी टेक्स 5 crore rupees for a 1 minute ad नवरत्न तेल बेचने का. There are so many actors. I mean, शाहरुख खान जो पेन वो बेचते हैं, then there are कैटरीना कैफ, माजा मैंगो, ताजा मैंगो. What I'm trying to say over here is, those are the people who are the celebrities of that brand, है ना? हम लोग उस ब्रांड को जानते हैं. हम लोग लक्स कोजी किससे रिलेट करते हैं? Who can type? सलमान खान, if I'm not wrong. Yeah. So how do we know all of them? क्योंकि वो बहुत, you know, that huge chunk of money goes into celebrity को उन्होंने 5 crore रुपया दिया, उन्होंने आके अपनी एक ad बना दी. अभी forever ने क्या किया? forever के लिए हम लोग एक आम इंसान जो है, हम लोग celebrities है. Very 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 important point to understand. बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ना नहीं तो वो स्कैम का बत्ती स्कैम में ही रह जाएगा. यार ये कैसे आ रहा है? ये तो कुछ तो झोल है, सिर्फ फोटोशॉप करके लगाया हुआ है. दीज आर रियल चेक्स माय डियर. ये चेक्स आप यूट्यूब पे जरूर देखना. फॉरएवर के बारे में गूगल जरूर करना. या आपको हर एक पिक्चर, हर एक यूट्यूब, हर एक प्रूफ, जिन्होंने आपको बुलाया है, आज इनवाइट किया है, उनसे और पूछना कि मैम, वो डायरेक्ट पूछना, बिल्कुल बिल्कुल बेशर्म होके कि यार ऐसा कैसे आ गया. या आस्ते दिमाग में रखेंगे तो शायद भूल जाएंगे, उसका मतलब नहीं रहेगा. या सो आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि फॉरएवर के लिए वी आर दी सेलिब्रिटीज. या उन्होंने बोला कि जितना 5 करोड़ 10 करोड़ हमने हर एक कंट्री में अपने उनके सेलिब्रिटीज को देना था, वो उनको ना दे के आपको हम ऐसे चेक्स दे रहे हैं. तो chairman bonus is a huge money which the company gives out to forever business owners, people like you and me, because वो बोलते हैं कि आप हमारे brand ambassadors हो, आप हमारी publicity कर रहे हैं. Yeah, so for example now the last year company ने 3% जो उनका एडवर्टाइजमेंट का बजट होता है, 3% डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी टर्नओवर था इन पीपल. तो वंस अगेन वील अंडरस्टैंड कि ये चेक्स अगर बड़े आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं. नाम अगर इतनी अच्छी कंपनी है, हमने नहीं सुना, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. या स्टार्ट आस्किंग व्हाई, पूछना शुरू करो. यस, मूविंग अहेड. ओके, दीज आर सम ऑफ दी हमारे जो प्रोडक्ट्स है, 150 से भी ज्यादा रेंज के हमारे प्रोडक्ट्स है, एंड दीज आर सम ऑफ दी फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स. एलोवेरा जेल जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वायर वो लीडर्स, समझेंगे उसको ना. यहाँ पे अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, टू मेक श्योर ऑफ कि इसको ना आप गलती से भी, क्योंकि मैं इतना प्रोडक्ट्स कर रही हूँ बिकॉज आई एम सच अ फैन ऑफ इट, इसको प्रोडक्ट बेचने वाला काम मत समझ लेना. या फॉरएवर डज नॉट मीन सेलिंग एलोवेरा. इट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको
इंडस्ट्री को वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। बहुत लोगों को ना समझ में नहीं है कि ये इंडस्ट्री है क्या। कुछ सुना हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है, किसी और का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से अपनी आप अपॉर्चुनिटी मत खोना। या सो इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू अंडरस्टैंड, टू लर्न मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, देन आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास 4 घंटे है, 4 दिन है, तो आप जरूर हमारी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर। यस, and you are free to ask anything about anything. Yeah, jitna mujhe aata hoga, I will definitely answer you. Otherwise we have our seniors, of course. This is the marketing plan which we will definitely understand in the next 4 days जब ट्रेनिंग होगी। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि किस लेवल पे कितना काम करके किस तरह से कितना पैसा कमाया जा सकता है। जो राइट साइड पे मैंने ग्लोबल ट्रैवल लिखा है, या जो नंदा साहब ने अपना बताया, किस तरह से उन्होंने 5 गाड़ियां फॉरएवर की तरफ से ले ली है, या किस तरह से वो 25 कंट्रीज में घूम चुके हैं। बहुत सारे इनकम सोर्सेज है, लेवल्स है, वो यहाँ से किस तरह से कमाए जाते हैं। these are the few major points which I think मैं इस वजह से इस business में मैं हूँ। Yeah, these are the most important points for me. First is I can do it online. आज की डेट में अगर business online नहीं है, तो I think कि उसका existence is a question. Yeah, so your wish, आपको online करना है, आपको offline करना है, you can do it. It is in 160 countries. Major point for me. मेरे को बड़ा खेलना है, so I need a platform big enough. यू कैन डू इट पार्ट टाइम, हो सकता है आपका फुल टाइम कुछ जॉब चल रही हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आपका कुछ ना कुछ, यू कैन डू इट फुल टाइम, पार्ट टाइम, हाउ मच एवर टाइम commitment you want to make. It's a risk free business for all those who are broke like me. Yeah, it's a risk free business. आपको कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। yeah? Passive income, very very important point. there are people, यहाँ पे भी हमारी मीटिंग में भी हो सकता है कुछ लोग जो जॉब कर रहे हो या फुल टाइम किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो। if you are in 20s and 30s, and I can say it from myself, it is very very important आज के टाइम में to start building your passive income. If you are not building your passive income, it's a huge सिचुएशन से हमें काफी कुछ समझ सीख भी मिल गई है, समझ भी आ गई है। पैसिव इनकम कमाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। टाइम लीवरेज, द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट, बट वी विल कवर दिस इन 4 डे ट्रेनिंग। हमारे पास टाइम नहीं है टाइम लीवरेज को कवर करने के लिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम अभी, फॉरएवर इन इंडिया। ये कुछ तो जो कंपनी के ऑफिसेज है, अपने ऑफिसेज है इंडिया में, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यू कैन सी जहाँ पे भी आपका घर है उसके आसपास कोई ऑफिस है। एनीवे अभी तो सब ट्रेनिंग्स कंपनी की तरफ से ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है, बट जस्ट सो यू नो, या देयर आर 19 ऑफिसेज इन इंडिया। इंडिया की टर्नओवर अभी, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, ये जो यहाँ पे स्टैट्स है, ये 2018 के हैं। अभी तक मैंने लिखा 2600 मिलियनर्स इन इंडिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज नाउ इट इज मोर देन 4000 मिलियनर्स। अभी ये जो बहुत क्विक ग्रोथ हुई है, इस 2020 में बाकी कंपनीज, बाकी जगह का रिसेशन हो सकता था, यहाँ पे जो बूम आया है, इस कंपनी में जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, जो 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे थे, उनकी जो ग्रोथ आई है, नाउ द नंबर इज ओवर 4000 मिलियनर्स इन इंडिया। एंड दिस इज द फाइनल स्लाइड, आई सपोज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इसका फ्यूचर क्या है। आज अगर हम लोग कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले कंसिडरेशन ये होती है कि यार आगे आने वाले टाइम में वो चलेगा या नहीं। अगर मैं अभी कोई बिजनेस खोलूंगी, तो डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग अबाउट कि यार हो सकता है आई नीड टू कंसिडर द मार्केट, स्पेशली आज के टाइम पे। सो लेट्स सी दिस FICCI इज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। व्हाट डज इट से? द टर्नओवर, एंड माइंड यू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो 700 करोड़ की टर्नओवर 2014 में थी, और 65,000 करोड़ की टर्नओवर 2025 में होने वाली है, ये जो आंकड़ा है बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज नाउ द मार्केट हैज चेंज्ड सो मच ग्लोबली कि इंडिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और ये जो फिगर है, आई थिंक ये 25 से पहले 2023 तक ही पहुंच जाएगी। द राइज हैव बीन वेरी वेरी क्विक बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज पीपल, अभी कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम home ढूंढ रहे हैं, and this is the work from home, this is the opportunity that you're getting. I hope you understand what I'm trying to say. First is network marketing, second is health and nutrition. Health and nutrition,
मुझे इसके बारे में शायद बोलने की भी इतनी जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी आर अवेयर कि यार लोग कितने कॉन्शियस हो रहे हैं. अभी लोगों को हेल्थ के महत्व, दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, है ना. हमें समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है. इट्स गोइंग टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री. ये और ग्रो करेगी. आपने हो सकता है, जैसे लोग कहते हैं ना, पीसी बूम आया था या आईटी सेक्टर बहुत फ्लरिश की थी, काश तब होते वहां पे. नाउ इज द टाइम टू बी एट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम. यू हैव टू डिसाइड. आपको अगेन यहाँ तक कोई आकर बिठा सकता है, आपको कोई ट्रेनिंग तक ला सकता है, बट यहाँ से आगे जाना आपको डिसाइड करना है. You are the one to take the decision, and I think nothing better than, if it's a risk free business, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, जा तो कुछ नहीं रहा, आ ही सकता है. You're not losing anyway, you're not losing anything. You might as well change your life. Yeah. So will forever work for you? We don't know. I don't know. जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, रियली थैंक देम. चाहे आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, उन्होंने, they invited you with a big heart कि यार इसकी जिंदगी मुझे बदलनी है, और they saw something in you कि if अर्जुन को इनवाइट किया, then Arjun has the potential to do this. They invited you with a very strong heart and that feeling. Thank them for inviting you and tell them कि thank you for inviting me, जो भी आपकी श्रद्धा भाव. But we don't know, will forever work for you? You have to decide that. आपको आज डिसाइड नहीं करना है. टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट. ट्रेनिंग लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए. यूट्यूब पे सर्च करना है जरूर कीजिए. आपको जो क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, हो सकता है यूट्यूब पे देखे, गूगल पे देखे. ना ऑफ कोर्स इफ देयर इज 80% पॉजिटिविटी, तो 10-20% नेगेटिविटी वाले फैलाने वाले लोग भी होते हैं. तो अगर आपको कुछ एक सवाल भी आ रहा है ना, पूछिए जरूर. द रियलिटी, द ट्रुथ इज व्हाट यू वांट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, आपका जो भी रीजन है डिसाइड करने का, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. डाउट में आगे, या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, assumption, इन सब वजह से आप डिसीजन मत लीजिए. So and forgive me if you think I'm just trying to be. All I want is you take the right decision for yourself. आपके लिए जो सही है, आप वो डिसाइड कीजिए. So this is all from my side for today, and I know आज का सेशन थोड़ा एक्सटेंड हो गया, हम टाइम से काफी आगे निकल गए, because I didn't want to miss on this opportunity कि नंदा साहब हमारे गेस्ट आए, तो of course we want to listen from him. So thank you वेरी मच. बहुत ही पेशेंटली आपने सुना, एंड बहुत ही अच्छे आपने रिस्पॉन्ड भी किया, एक्सेप्ट किया. एंड आई होप आपको कुछ एक आइडिया मिल गया हो, एक ग्लिम्स मिल गया हो, कुछ तो समझ आया हो. सो इफ द आंसर इज यस, देन दैट इज मेरी सफलता है वो. सो थैंक यू सो मच. नाउ द माइक इज ओपन. आई वुड रियली वांट जो हमारे नए गेस्ट हैं, if they want to say something, ask something, we will take another 5 minutes. आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ बताना है, you can raise your hand. Hani sir will unmute you, and you can really share your experience. आपको कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, जितना मुझे आता होगा, I'll definitely help you out. You can raise your hand, you can write in the chat box, and welcome Manisha. I'm sorry, Aksh, if that's how you pronounce it. I really would want to talk to you. You raised your hand. Hanisa, can we unmute him? Yes. Aksh, unmute yourself. मेरी तरफ से आप unmute हो चुके हैं. Hello, Hanji. First of all, sorry about your name. Yes. Yes, it's for students, and आप बोल सकते हैं. अक्ष, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही.
अजित पांडे जी, thank you very much. This is for students अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है. Yes, powerful session, man. Thank you very much. Thank you, Anushka. Thank you very much. Thank you very much. अक्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही. निखिल केएस, please unmute yourself. Hi, myself Nikhil. Hello. Hello, can you hear me? Can you be a bit more louder? Can you hear me now? हाँ जी, थोड़ा ऊंची माइक के पास आके बोल सकते हैं आप. Okay, how about now? Yes, I think. Go ahead. So there are a lot of multi-level marketing companies currently available recently. So I like to know how you are different from others. They do this kind of people under the pyramid structure and all those kind of things and selling products. And how you will be like different from these multi-level marketing. Nikhil, you're from Kerala. I know that about you. Welcome, first of all. Very good to have you here. So, if I'm not wrong, your question is that there are a lot of multi-level marketing companies in the market. How is Forever different than any other company, right? Is that the question? Because I think the volume was a bit low. So I'm just confirming if this was the question. ऐसे ही था? Thumbs up? Can anyone confirm me? I don't know if mera mic खराब है कि कैसा था. But if yes, okay. All right. So I'll try to answer this to the extent as much as I know. First of all, yes, there are a lot of companies. जैसे कि, for example, there are a lot of companies for every brand also, right? That way, there are a lot of companies in network marketing, in multi-level marketing also. Yes, you have to decide and differentiate on these three levels. How is the background, the company that you're talking about? What's the background of that company? Is it 2-year-old? Is it 5-year-old? Is it 10-year-old? Is it 40-year-old? Is it how long is? Second is products. Because in the end, the business is about products. If the products are not consumable, if the quality of the products is not very high, you have to decide, and you would only know once you would maybe use the products or attend the training. Of course, I have done my survey. Of course, I use the products. I've been using it for a long time. I would say it's the best, but you have to decide. How can you decide? By training, by using a couple of samples of the product. Third is very, very important is how is the financial compensation plan? There's so many companies in the market. Yeah, there's so many companies in the market, and every company has their financial company. Now, there could be a possibility that the company is good, the background is strong, but it's difficult to earn money in that company. Yeah, actually, I'm saying this from our senior Nanda Saab's experience. He has tried his hand in so many companies. I don't want to name them. In one of the major company also, which starts with letter A, and he has worked in that company for 4 years. But then the reason he came to Forever was because he couldn't earn money. Financial compensation should be one of the strongest reason. Yeah. So how can it's up to you in which company you want to work. But I can only guide you. I can only tell you that these are the bases, that I have done my research on these three bases. You have to decide. Plan, I think there are a lot of restrictions. If it's a pyramid plan, I think for me it's a no. Yeah. But if the plan is very genuine, if the plan has no limitations, if there is no income cap, sorry for everyone, I'm speaking in English because he's from Kerala, so I assume Hindi mein bataya jayega answer. So you have to consider a lot of factors, then you decide, sir. Very, very humbly, I have done my research. I have compared more than 10 companies.
to my knowledge. And of course, there are 50 companies, you can decide on whatever basis. For me, these three things matter the most. If I have to work in a company, if my name is attached to the company, I should be accountable for the product. If it's not the best product in the market, I as a dietitian cannot give it to my clients. I as a as a daughter, I cannot give it to my parents. As a friend, I cannot give it to my friends. Why? Because people are going to blame me. You did not do justice, you just sold me something. But only because I'm so convinced of the products, I can blindly give it to whatever patient. I don't even name it, but I have patients, I have cancer patients, and it's for the safety of the products. I'm just trying to tell you how safe are the products. We can give it to a small baby, we can give it to someone as big as possible, whatever the age is. So you have to decide. I mean, there are so many factors, and we need to be aware of the comparison parameters. It could be different for you. Most of the people come for money. If we are talking about business, we come for money. Yeah. So you have to see which company in India is making the most millionaires. I think the answer is very clear, but you got to do your research. Yeah. So I hope it answers your question. And if Uday sir, if Honey sir, if Nanda sahab, if you think we can add something to it, if because you have more experience, then definitely go ahead. If you think the answer is satisfactory, then we can move to the next question if someone has it. Yeah. Okay, perfect. But yes, Nikhil sir, I think this question answers a lot of other questions. Yeah, बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि कितनी सारी कंपनीज है, एंड वी डोंट टेक नेम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट आप समझ सके होंगे, है ना, हम आए दिन कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में सुनते हैं. कैसे हम डिसाइड करें? हाउ कैन वी डिसाइड विच कंपनी टू चूज, विच कंपनी टू गो फॉर? देयर आर पैरामीटर्स. जैसे हम लोग कॉलेज, कितने सारे कॉलेजेस है ना, तो मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे सिम्बोसिस में ही जाना है? देयर आर पैरामीटर्स. यू गोटा चेक व्हाट्स द बैकग्राउंड, व्हाट्स द फ्यूचर, यू गोटा चेक व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू आर गेटिंग. Similarly for the company. Yeah. Do we have more questions? हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हैं. दे आर सेंडिंग देयर कांटेक्ट नंबर ओवर हियर. लेकिन आपको जिस पर्सन ने यहाँ पे बुलाया है, जस्ट ट्राई कांटेक्टिंग देम. कुछ लोग 4-day मीटिंग्स के लिए भी रेडी हैं, लेकिन आप उनको कांटेक्ट करें. मेरे को लगता है संजम, टाइम देख के यू आर रियली वरीड फॉर दैट. Oh, I didn't realize it's 8:40 already. I'm so sorry. In interest of everyone's, we'll just end it and wrap it up in next 2-3 minutes. Nanda sahab, sorry to cut you, please. हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेरीज आ रही है अभी, क्योंकि बिल्कुल रॉ पर्सन है. लोगों ने डायरेक्टली सिर्फ लिंक भेज दिया है. दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उन्हीं से कांटेक्ट करें, और यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर देना, या ट्रेनिंग्स किस तरह से स्टार्ट होंगी, एवरीथिंग, एक एक चीज का आपको फीडबैक मिलेगा. जस्ट कांटेक्ट द पर्सन जिन्होंने आपको आज यहाँ पे बुलाया है. आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप. और कुछ कहना चाहता है, जस्ट फॉर 1 minute, एनीबडी कैन रेज हैंड एंड से कुछ माइंड में अगर रह गया. नहीं तो फिर कल दोबारा से मिलते हैं 7:30 बजे. आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको 4 days की ट्रेनिंग लगानी है, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनको बता सकते हैं. They will be making a group for, because we are it's a good strength. और सबको मैं individually message नहीं भेज सकती, so we'll make a group. I'll be sharing the link over there, and we'll be glad to have you all, man. So you're such a nice audience, nice responding audience, and definitely 4-day training का एक छोटा सा हमने रूल बनाया कि वीडियो तो definitely on रखनी है. I also want to see you. This is unfair. Aksh, I'm gonna learn how to pronounce your name. आप मुझे बाद में बता सकते हैं. ठीक है? Okay, once again, thank you so much for coming and listening to me. Means a lot. Really means a lot to me. And happy Diwali once again. Have a good night. Eat healthy, stay healthy. We'll meet soon for the 4-day training. Even if you want to come again for the intro, आपको दोबारा से आके intro session लगाना है, most welcome. आप जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनको बता सकते हैं. ठीक है? And bye bye.